Screen visible? Yes, sir. I'm also audible? Yes, sir. बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? Screen sharing is visible? Okay. Yes, sir. क्या दिख रहा है अभी? Payroll terms. Presentation is visible. Something is wrong at my end. Now, I'll share. Let's have a look at this Excel sheet. ये दिख रहा है? Yes, sir. Calculate the components. What is the criteria? How much is the basic? 45%. 45% of CTC, right? Hmm. I'll say that iska 45% is my basic. Okay. How much is the DA? 10% of basic. 10% of basic. So this multiplied by 10%. Okay, so 45 rupees is the DA. What is HRA? 40% of basic.
40% of basic. So basic is this much. Iska 40%. Okay. How much is conveyance allowance? 1600. Okay. So 1600. अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? 1600 multiply by 12. Because 1600 per month. Okay. And all these amounts are in terms of annualized. Similarly, medical. Medical कितना बोला हमने? 1250. 1250 per month, right? Right. So this is 1250 multiplied by 12. Education allowance 200. 200 per month. So this becomes 200 multiplied by 12 for annual. Telephone allowance 450. per month. So this becomes 450 multiplied by 12. Okay. Now ये सब होने के बाद में जो बच जाएगा that becomes your special allowance. So this is total CTC minus sum of all these. So 2,83,000 is your special allowance. HRA is exempted in IT based on clauses. Conveyance allowance exempted up to 19200 annually. Medical exempted up to 15,000 annually. Education allowance exempted up to 2400 annually. And telephone allowance, it is exempted. I don't know how much amount, I'm not very sure, but it is also exempted to some amount. Okay, so these values are non-taxable values. Not full HRA, but part of this HRA is exempted. Part of HRA. Okay, so this is how your special allowance is calculated. Any doubt, any question? No, sir. Vanshika? No, sir. Okay. Now, what are the ingredients of processing the payroll? Payroll process करने में क्या-क्या चीजें हैं? What are the ingredients to process the payroll? क्या-क्या जरूरत है? क्या-क्या चीजें लगेंगी हम? तो सबसे पहला तो है employee master data. Okay, this master data is required because कौन सा employee किस दिन ज्वाइन किया, उसका क्या सैलरी बाइफिकेशन है, किस लेवल में है, किस ग्रेड पे है, उस ग्रेड पे क्या क्या बेनिफिट्स एप्लीकेबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी पेरोल processing, whether it is manual or through system, the very first thing required is employee master data. उसमें भी specifically employee code, his name, his grade, designation, salary structure. Okay, ये master data सबसे पहले जरूरी है for any payroll processing. What are his or her entitlements? उनको क्या चीजें मिलने योग्य हैं, क्या मिलने पात्र है ना? So that is entitlements.
Then attendance and leave record of the employee for a given month. जिस महीने का हम पेरोल प्रोसेस कर रहे हैं उस महीने का उनका अटेंडेंस एंड लीव रिकॉर्ड. In leave record, there can be different type of leaves, paid and unpaid. So if there is unpaid, it is leave without pay, or loss of pay. Salary breakup details of employees. Already we just saw a small salary detail, basic HRA, DAV, etc., etc. Bank and PAN details. Bank details for disbursement of the salary, and PAN details for calculation of TDS and informing the NSDC or NSDL about or the income tax department about deduction of TDS. Details of new recruit if you are processing the payroll for the entire plant or unit. If there is any newly hired employee, तो हो सकता है उसने कल ज्वाइन किया हो और आज आपका पेरोल साइकिल पूरा हो रहा हो. ऐसे केस में उसका एक दिन का सैलरी बनाना है या नहीं बनाना है. अगर बनाना है तो पेमेंट कैसे करेंगे. उसका अकाउंट डिटेल नहीं होगा या उसका अकाउंट नहीं खुला होगा. In that case, how the payment would be processed. Details of separation. Separation मतलब अगर किसी आदमी ने छोड़ दिया, voluntary या involuntary, whether it is by way of resignation or by any other means. What are the separation reasons? और अगर जो separation है, तो कौन सा उसका last working date था या कौन सा last working day है, उसके हिसाब से ही salary process करने का. Then past payment corrections, supplementary payments या deduction. पिछले महीने उसका एक छुट्टी था जो एडजस्ट नहीं हुआ था, हमने उसका सैलरी काट लिया था, तो उसको इस महीने की सैलरी में एडजस्ट करना है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड करेक्शन. समझ रहे हो ना. ऐसे हतप्रभ क्यों देख रहे हो. इफ यू मेक द कैलकुलेशंस इट इज इंटरेस्टिंग, इजंट इट. And if you understand, you will make right calculations. And if you remember these terms, it will be easy for you to, work as and when you will be into that area. Okay. So when we say past payment correction, this means पिछले महीने हमने उसका कुछ सैलरी काट लिया था या ज्यादा दे दिया था, तो उसको इस महीने एडजस्ट करेंगे. That is also part of payroll. Supplementary payments कुछ additional payment करने हैं जो हर महीने नहीं होते हैं, हर एम्प्लॉय के लिए नहीं है, या there are certain deductions which we did not do last month, so we have to adjust in this month. ठीक है ना. Then there are statutory deductions. Statutory मतलब जो कानूनी तौर पे जरूरी है, जैसे प्रोविडेंट फंड, ESIC, जहां भी एप्लीकेबल है वहां प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स या TDS. ओके, सो प्रोविडेंट फंड, ESIC, प्रोफेशनल टैक्स, PT स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल टैक्स एंड IT स्टैंड फॉर इनकम टैक्स या TDS भी बोलते हैं. सो दीज आर स्टैट्यूटरी डिडक्शंस. देन एनी प्रीमियम if company is paying on your behalf, or you have asked your company to deduct from your salary, then those deductions, non-statutory deductions, these are deductions which you voluntarily have saved. Okay. Then payment of fringe benefits. Yeah. What could be the conditions that I'll ask them to deduct my salary? Okay. Company is providing a death scheme, okay, wherein it is voluntary for an employee to contribute from his behalf. मतलब कंपनी के पास में एक ऐसा पॉलिसी है जहां कंपनी ऐसा बोलती है कि भाई अगर कोई इवेंचुअलिटी होता है किसी भी एम्प्लॉय के साथ में, कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है और उसका स्वर्गवास हो जाता है, निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है, ऐसे केस में हमको उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता करनी चाहिए. और उस आर्थिक सहायता के लिए हर एम्प्लॉय अपनी तरफ से एक दिन का सैलरी कंट्रीब्यूट करेगा या हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा.
या as and when condition arises, employee will contribute to this particular fund. So this becomes a voluntary deduction. So if you agree कि मेरे सैलरी में से कटना चाहिए तो कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा, है ना. जैसे भी बीच में क्या हुआ था, इवन फॉर कोविड, सुनामी, अर्थक्वेक, देयर वाज प्रधानमंत्री राहत कोष, है ना, प्रधानमंत्री राहत कोष. तो उसमें they had requested for the organizations to donate in order to combat the pandemic, so that government can help the beneficial activities for those who cannot afford, है ना. तो खाना, राशन किट और ये सब जो था उसके लिए then there was a request. It is not voluntary, it is not compulsory कि करना ही है, but voluntarily people will do. शहीद दिवस के दिन contribute करते हैं, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो गई उसके लिए they ask industries to contribute, and then industries in turn ask people to contribute. So that is called voluntary deductions, which on your agreement company would make, है ना. Then fringe benefits. Fringe benefits are benefits which are not paid in cash but in kind. जैसे कंपनी ने आपको 2000 रुपए का मूवी वाउचर दे दिया, पिक्चर देखो मत देखो, but then you will receive a voucher in terms of, instead of cash 2000 rupees, और 15,000 rupees का आपको ग्रोसरी वाउचर दिया. Sodexo is a company, Sodexo, so that gives vouchers for grocery purchase. Okay, so you as an employee will have the benefit of income tax. सामान तो खरीदना ही है ना, हर महीने राशन तुम खरीदते ही है, तो वो राशन आप कैश में खरीदो या सोडेक्सो कूपन देके खरीदो, you have to spend. Okay, but when company is giving you this option of having any fringe type of assistance, it is always beneficial because that coupon will be exempted in income tax calculation up to certain limits. Okay, so as far as my knowledge, 2200 rupees per month is an exemption for calculation for this Sodexo coupon. Okay, so 2200 per month is I think is the amount which is exempted. तो 2200 रुपए का आपको कूपन मिलेगा, उससे आप ग्रोसरी परचेस कर सकते हैं, और उस 2200 पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है. Okay, that would not be considered as your income. So those are fringe benefits. कंपनी का गाड़ी है, कंपनी ने ड्राइवर दिया है, रहने के लिए अकोमोडेशन दिया है ना. Any other benefit which is not paid in cash but in kind can be fringe benefit. So sometimes that amount can be deductible, sometimes that amount can be transferred on your behalf to other agencies. जैसे सोडेक्सो है तो उसका पैसा कंपनी आपके बिहाफ पे सोडेक्सो को पेमेंट करेगी, है ना, और वो बाद में आपके वॉलेट पे रिचार्ज कर देंगे. देन पेमेंट डिडक्शन ऑन लोन्स. आपने कुछ कंपनी से लोन लिया है, देयर इज अ पॉलिसी एंड कंपनी गिव्स यू लोन, यू हैव टेकन सम लोन, सो डिडक्शन ऑफ ईएमआई, यू हैव टेकन सम सैलरी एडवांस. बच्चे का फीस भरना है, आपको पैसे का जरूरत है, आप दूसरे तरह से नहीं मांगना चाहते, you can manage from the salary, so you are requested your company that keep 1 month salary advance में दे दो, looking to your track record or your paying back capacity or your own value creation over the period of years. Company may consider giving you 1 or 2 salary advances which can be deducted in 2 or 3 installments. Then loss of pay. आपने छुट्टी ले ली, आपको छुट्टी नहीं थी, आपने ले ली, you were not entitled for any leave, still you did not come to office,
सो देयर इज अ लॉस ऑफ पे, है ना, या कोई गड़बड़ की, कुछ तोड़फोड़ कर दिया, उसका रिकवरी आ गया। केमिस्ट्री की लैब में जाके कैपिलरी तोड़ देते हो, टेस्ट ट्यूब तोड़ देते हो, तो प्रोफेसर कुछ बोलते नहीं है ना। सोडियम का टुकड़ा लेके सिंक में डालोगे, वो फटेगा तो फर्नीचर डैमेज होगा, लेकिन उसके लिए प्रोफेसर डांटते हैं, कुछ रिकवरी नहीं आता है, which may not be the case in the employment, है ना। In case of any damage, if it is of serious nature, there may be recoveries, or any payment made to you can be recovered, है ना। एक्सेस पेमेंट अगर कुछ कर दिया है तो उसका रिकवरी, गलती से दे दिया, किसी और का पेमेंट था, आपको दे दिया, तो देयर कैन बी अ रिकवरी आल्सो, ओवर पेमेंट, एक्सेस पेमेंट, any damage, so then there can be the recovery. So all these activities or all these are the components of payroll processing, ठीक है ना। Now how this is calculated, so there is an act, industrial employment या standing order act बोलते हैं उसको, model standing order भी बोलते हैं। तो calculation of salary is defined, if it is monthly paid, it is 30 days, है ना, and if it is daily paid, then it is for 26 days. So जो wages है वो 26 days, 26 days इसके लिए 4 संडे, so no work no pay, है ना। जो लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जो रोज का रोज काम करते हैं, उनको रोज का रोज पैसा मिलता है, उन लोगों के लिए when it is calculated, when any deduction is calculated, any recovery is calculated, it is calculated on 26 days of a month. And when people are paid on monthly, then any recovery, any damages, any deduction is on 30 days basis. Okay, so that the contribution or deduction remains uniform. है ना। आपका जो भी सैलरी है ना, तो ऐसा नहीं था फरवरी के महीने में कम पैसा मिलेगा और दिसंबर में ज्यादा मिलेगा, ऐसा होता है क्या? पापा को पूछना, या घर में जो भी सैलरी अर्न करता है उनको पूछो कि आपको फरवरी में कम पगार मिलता है क्या? ऐसा नहीं होता ना, एवरी मंथ द सैलरी इज सेम, सो वेदर इट इज 30 days, वेदर इट इज 31 days, और वेदर इट इज 28 days, द सैलरी इज सेम, है ना। And deduction will also be uniform, and for the daily wages it is for 26 days. This is just to remember and for your information. This is a sample salary slip, for the month. As I said, that there are income and there are deductions. So what is in earning? In earning, it is basic, then DA, then house rent allowance, then conveyance, then medical allowance, और ये सब काट पीट के जो बचेगा, that is special allowance. So your gross salary is 98,100 rupees. इसमें से there are statutory deduction of professional tax at the rate of 200 rupees. Provident fund, which is 12% of the basic, is 4,800 rupees. And TDS, as per applicable Income Tax Act, in this particular case, it is 10,000 rupees. So your gross salary is 98,000 rupees 100. Your deduction is 15,000 rupees. So your net salary becomes 98,100 minus 1,500, 83,100 rupees. This is the net salary. या टेक होम सैलरी. अब इसमें कहीं कोई वॉलंटरी डिडक्शन आ गया, वो डिडक्शन साइड में आ जाएगा. इसमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री है, इसमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री है ना. मतलब बेसिक मैंने ज्यादा दे दिया था, बेसिक आई पेड मोर,
तो वो अर्निंग साइड में माइनस में आएगा, डिडक्शन में नहीं देखेगा। अगर मैंने कोई पेमेंट एक्सेस कर दिया है, सपोज यू डिडंट, आप पिछले महीने एक दिन नहीं आए थे, लेकिन मैंने उस एक दिन का पेमेंट भी आपको कर दिया है ना, तो उसका जो एडजस्टमेंट होगा, दैट एडजस्टमेंट विल बी इन द पार्ट ऑफ अर्निंग। सो बेसिक 40,000 एंड बेसिक एरियर्स करके एंट्री होगा, जिसमें 40,000 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में एंट्री होगा, है ना। 40,000 इज मंथली, so 40,000 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बी द माइनस एंट्री। अगर भूल गए हैं, पिछले महीने देना था नहीं दिया था, so that will be basic arrears, that will be positive entry, but any of this entry will be in earning and not in deduction. Okay, salary advance लिया था, that will be a part of deduction. कोई contribution है, that will be part of deduction. Okay, making sense? Are you clear? There are certain calculations that we will see in next class. What are the applicable conditions for calculation of PF or YSI or gratuity or other things that we will see in the next class. Okay, if you have any question or doubt, you may ask. Are you ever now you're clear about payroll? Yes, sir. What is payroll? You are clear, right? Salary and wage में क्या difference है? What are the components of salary and wages? How it can be calculated? How a salary slip look like? Okay, all these things we cover today. Some of the calculations, okay, that we will see tomorrow in our class around same time 6:30, half an hour plus minus. Okay. Meanwhile, if you can complete that assignment, you please do that. Right, and have some reading on payroll. Okay, the rest we will do tomorrow. Okay, sir. Thank you. Okay, if you have any question, please ask. No, sir, no questions. No question. इतना थक जाते हैं, कोई सवाल ही नहीं। ध्यान। Thank you, sir. Okay, good night मतलब ना, जाओ। Okay, okay. Anyway.